Hello children, how are you? Very good morning. Hope all are well. This is Amita. In previous session already discussed about face value. Here discuss about place value. How can define place value and take some example and then know about. यहाँ पर हम प्लेस वैल्यू जानेंगे. फेस वैल्यू को हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि फेस वैल्यू क्या होती है. फेस वैल्यू वही होती है जो डिजिट स्वयं होती है. ओके, फेस वैल्यू की जो डिजिट की वैल्यू होती है वो फेस वैल्यू के समान होती है. इट सेल्फ डिजिट होती है. तो फेस वैल्यू इज द एक्चुअल ऑफ ए डिजिट एंड फेस वैल्यू इज द डिजिट is the same of value of digit itself. Okay, so here discuss about only place value. Place value, the value of the digit based on its position. The place value, here only discuss about place value. Place value, okay, place space. Yeah, we can say here in any digit occupies which space and which position. This is called place value of the digit in given number. Okay, तो place value क्या होती है कि जो digit दिया गया है जिस नंबर की मान, suppose this number 5 6, तो इस यहाँ पे 6 की जो place value है वो क्या होगी. So after few minutes I will make a chart of Indian place value. Okay, so very easy way method of you can understand this topic. आप बहुत easy way में इस topic को उस chart के जरिए समझ पाएंगे. So little bit description here, face value and place value, and this topic divided by 4 or 3 parts. 3 or 4 part may be possible divided by me. Here this is a part 2. Okay, here this is a part 2. Part 1 already discussed about in previous video. Face value, about face value. Okay, so yeah, here place value, the value of digit based on its position. The value of digit based on its position, or we can say here place in given number. And other words we can say here the any digit number in any digit in the given number, the which digit occupies the space. जो भी digit दी गई है, suppose this one here 3 digit number 254. Okay, so any digit in this given number, the digit, suppose the example of 5 round here, 5 को हमने राउंड किया है. इसको लेके हम एग्जाम्पल देंगे. यहाँ 5 की जो पोजीशन है, जो ऑक्युपाई स्पेस है, जो इसने स्थान घेरा है, जो पोजीशन है 5 की, इस पोजीशन को ही हम प्लेस वैल्यू बोलते हैं. प्लेस वैल्यू इज अ चेंजेबल. ओके, in any digit in any given number is also changeable, but face value is not changeable. Okay, is a fix. Okay, fix itself. So firstly, make a face value chart. Here, this one, you can make this in your notebook. Okay, this is a face value chart. Here. Okay, so divide some division, some parts. Divide this box. This one. Ones. This is the Indian place value chart. Okay, ones here divide into 3 parts. Ones is divided into 3 parts. You can see on your screen and you can draw, you can make a chart with me. Very easy way, you can easily learn. आप बहुत ही आसानी से इसको समझ सकते हैं, कभी नहीं भूलेंगे. Keep in mind. Okay, so ones, this is a ones divide. Firstly take a 1. पहले हम वंस लेते हैं. वंस को हम 3 पार्ट
पार्ट में डिवाइड करते हैं. Ones, thousand and hundred. ओके, वंस, थाउजेंड एंड हंड्रेड. वंस को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया. वंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. वंस, थाउजेंड एंड हंड्रेड. वंस को हम 3 पार्ट में 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं. वंस, थाउजेंड एंड हंड्रेड. ओके, दिस इज अ इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट. ओके, हियर, राइट हियर, इंडियन place value chart. You can make in your notebook. आप अपने नोटबुक पे बना सकते हैं इस चार्ट को, और कभी भी आप नहीं भूलेंगे. किसी भी डिजिट में आपको कभी भी कमी महसूस नहीं होगी. कभी भी आपका जो क्वेश्चन है दिया हुआ, कोई भी क्वेश्चन कोई भी प्लेस पूछ सकता है कि व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ दिस इन दिस गिवन नंबर, सो मेनी नंबर्स अवेलेबल. Okay, make it. So you can easily give answer this chart. Keep in mind. Please इस चार्ट को आप अपने दिमाग में रखें. तो थर्ड, सेकेंड पार्ट हम लेते हैं 1000. सेकेंड पार्ट को हम लेते हैं 1000. Here, divide into 3. Okay, divide into 3 parts. Sorry, divide into 2 parts. 1000 divide into 2 parts. Okay, firstly 1000 and this is a 10,000. Okay, 1000 and 10,000. Okay, so 1000, firstly ones can be divided into 3 parts. Ones, 1000, ones, tens, 100. Okay, and 1000 can be divided into 2 parts, 1000 and 10,000. And then we will come lakhs. Lakhs can be divided into 2 parts. Lakhs and 10 lakhs. Okay, lakhs and 10 lakhs, and lakhs can be divided into 2 parts, lakhs and 10 lakhs. Okay, and first, second, third and fourth. This is a period. Okay, here this one is period. This one is period symbols. Okay, this one is period symbols, lakhs, and then last crore. Crores can be divided into 2 parts, crore and 10 crores. Okay, TC means 10 crores. So this is a very clearly description here. Period. This firstly columns available in this chart in the upper portions denoted as a period or symbol. इस चार्ट का जो पहला पार्ट है वो डिनोट कर रहा है, वो दिखा रहा है, दर्शा रहा है पीरियड को, सिंबल्स को. दिस इज an arrow with arrow. In this chart, the firstly upper part of in this chart denote as a symbol or period. Okay, and then right here ones, 10 and 100. This is a very careful place. Okay,
1, 10 and 100. This is 1,000, 1,000 and then 10,000. You have to write here 10,000. Okay. Okay. यहाँ पर हम लिखेंगे वंस में 1, टेंस में 10 एंड 100 में 100, 1000 में 1000, 10,000 में 10,000. Okay, and then we will come in position of lakhs. When this is a 1 lakhs. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 50, 1 lakhs. Okay, and this position 10 lakhs. Okay, so here 10 and lakhs. $10 lakhs, and then we will come next position crore. Okay, crore, 1 lakh, 10 lakhs. You can easily see this 10 lakh and crore. One crore. Okay, and then we will come 10 crore. This is a 10 crore. So this is a place value chart in Indian system. You can easily note down. Okay, and just take an example of place value and face value again. Okay, so again revise what is the face value. We have to write here the value of digit based on position. Okay, the value of digit based on position, this one, place value. The value of digit based on position the value of digit based on position, or we can say our place is in the given number is called place value. The value of digit based on position, or we can say our place in the given number, Okay, so it is called is place value. Place value किसको कहते हैं? Place value हम उसको कहते हैं, उस डिजिट को कहते हैं जो नंबर दिया हुआ है, उस डिजिट को कहते हैं जो जिसकी पोजीशन क्या है, उस डिजिट की स्थिति क्या है, वो किस स्थान पे है. सपोज वंस में, टेंस में, 100 में. दिस इज अ प्लेस वैल्यू. सपोज we will take here some examples of place value and face value. So suppose you can easily see in this. Suppose 700,7592. This is a 4-digit number. Okay. Example. And what is the face value of 5
and place value of 5. Both are. So, firstly, make a chart here. Firstly, make a chart. This one. Number, face value and place value. Here only take one example. This one 7,592. This is a 4-digit number. ये 4-digit number है 7,592. यहाँ पे हमको 5 की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों ज्ञात करनी है. तो फेस वैल्यू इट्स सेम. The digit of the value of digit is the same of digit. Okay, the face value is the actual of digit. Okay, so here five face value, number 5, face value 5 and place value here 7,592 and place value this one this number right here 7,592. This is a 4-digit number. Here 5. In this number the digit of 5. What is the face value of 5? 5 की face value क्या होगी? 5. And what is the place value of 5? Here 4-digit number. यहाँ हम देखते हैं 4-digit number है 7,592. Okay. So once 2 को हम ones place पे रखते हैं. Here this one ये ones and 1,000 10 9 10 place पे and 500 place पे. ओके 500 place पे. तो 5 की जो place value हुई वो क्या हुई? What is the place value of 5 in this given digit? 5 into 100. Okay, equal 500. This is a place value. Okay, so this one is 100 place. Okay, and next number 2. What is the face value of 2 in given number? This is a 4-digit number. ये 4-digit number है 7,592. 2 ones place पे इसकी face value 2 है and place value and face इसकी face value 2. What is the face value of 2 in given number? This is 2 and place value here place value ones. 2 into 1. Okay, ones here 100 and 1,000. Okay. And what is the place value of 9 in given number? This one is इस नंबर में 7,592 में 9 की प्लेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू तो 9 ही होगी. द फेस वैल्यू ऑफ डिजिट ऑफ 9 digit of 9 is same is 9. Okay, is same is 9.
And what is the place value? Sorry, place value क्या होगी 9 की? What is the place value in the given number? This is a 4-digit number. Then this is a place of tens. Here we can see here this chart and keep in mind this is this 9 here. Okay, so 9 is to 10, 90. This one. Okay, so tens place पे. Okay, tens place. Okay, अब what is the place value of 7 in given number? Okay, this one. This is a place value. Place value is the position of digit in given number. Place of digit in given number. प्लेस वैल्यू हम उसको कहते हैं जो संख्या की स्थिति है. इस चार्ट से हम देख सकते हैं जैसे 2 की जो जगह है वो वंस प्लेस पे है तो यहाँ पे हमने वंस लिख दिया. 9 की जो जगह है व्हाट इज द प्लेस वैल्यू एंड स्थिति या प्लेस जो पोजीशन है वो 9 की क्या है टेंस प्लेस पे है तो ये 90 आ गया यहाँ पे टेंस. ओके, एंड दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डिजिट एंड 7 इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 is 1000. 7 into 1000 equal to 7000. Okay, so the place value of 7 is 1000. Okay, and face value of 7 is same 7. Okay, this is a very clearfully description here and take only one example. 7. Take only one example. 7 5 9 2 7592. This is a 4-digit number. Okay, so I hope this topic you can easily understand in this video, and next video we will know about some more example of face value and place value, and some 5-digit number and 6 and 7 and 8 and 9-digit number. So we will end this video here. Please, I will request to please make this chart and keep in mind this is a very clearful description here. प्लेस वैल्यू. ओके, प्लेस वैल्यू वो होता है जो किसी भी नंबर में जो डिजिट की पोजीशन होती है, स्थान होता है, उसको हम प्लेस वैल्यू कहते हैं. दिस इज अ इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट. यू कैन इजली मेक इट एंड यू कैन इजली फाइंड दिस चार्ट in this video description box and all contact with me on my email. So this is a very necessary and needed exam topics of all grade. Okay, so we will end this video. I will request to all please subscribe, like and more, share and press the hit button for upcoming notification. Thank you very much.